my test. हाँ बिल्कुल. If you need a break, take a break, but do a test. बिल्कुल. बताना कि भैया I'm overloaded and feeling है मेरे में, तो take a break, do the test. उसके बिना आपकी तैयारी नहीं होगी. हाँ. You will never come to know where you stand. ठीक है? Yes. All right. Let's start with alternating currency. Generally, what we have done so far is this. So we have a resistance, we have a battery. So batteries are direct currents, DC. Okay, so they provide a constant voltage. So V versus T. This is for a direct current. बड़ा था टर्मिनल वोल्टेज EMF इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, राइट? Yes sir. ये लोड है जिसको आपको चलाना है, बल्ब वगैरह. ऑल्टरनेटिंग करंट्स आर नॉट लाइक दिस. ओके, उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता थ्रू आउट द टाइम. तो so if you draw their x and y, this is your voltage signal, this is the time. The alternating current we are dealing with is a sinusoidal, माने साइन या कोसाइन. जनरली साइन ही होता है. So it looks like this. ठीक है? ठीक. तो मतलब gradually it increases, reaches what is called as a peak voltage. So this is your peak voltage, and this is your. So इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो एक मैंने साइन ग्राफ पूरा बनाया है, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, मतलब 1/4 ऑफ अ साइकिल, देन 180 डिग्री, देन 270, 360. ये जो पूरा एक पूरा जो साइन ग्राफ बनने में 0 to 360 का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. Okay. I'll explain you this, but if you notice the difference, इसमें it is constant. इसमें टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम वेरिंग है, हर टाइम पे अलग है. Yes sir. ये भी पीक है इसकी, राइट? हाँ. सो जो साइनोसॉइडल है, मैंने इट फॉलोज द साइन ग्राफ. द वे इट इज रिटन इज वोल्टेज is time dependent and is given by V naught, maximum peak value, into sine of omega t. Simply जो मैं लिख रहा हूँ, this omega is the frequency of the voltage signal. तो जो हमारे घर में आता है वो ये आता है. This is what we get in our house. Alternating current. नाम alternating current है, but voltage भी इसमें included होती है. Because they will result in generation of only alternating current. Okay. जो मैंने राइट साइड पे सिग्नल बनाया, it is an alternating signal, and it is specially the one we are going to focus on is the sinusoidal signal. Alternating तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि let's make this. ये भी प्लस और माइनस है, ये भी प्लस और माइनस है, बट ये साइनुसॉइडल नहीं है. ये स्टेप फंक्शन जैसे स्क्वायर है, ये कुछ ट्राइंगल है. सो वी डोंट ट्रीट देम एज टू बी यूजफुल फॉर अवर पर्पस. ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, ये कई जगह और यूज होते हैं. हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साइनुसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं. दे रन ओनली ऑन दैट, एंड every second they are changing, they are time dependent. This is the equation of an alternating signal. When I say signal, I can mean alternating current or alternating voltage. One and the same thing.
दोनों कवर्ड होते हैं इसके अंदर। ऑल्टरनेटिंग करंट वर्ड में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज दोनों हम्म, इंक्लूडेड है। हम्म, ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। द signal, for example, in our house that comes has a frequency of 50 hertz. So here you can see there is no frequency because there is no change. So यहाँ frequency zero है. हम्म, Frequency तब होती है when you have repetition. Okay. So this is one repetition which I've drawn above. So this is one full sine curve. The second, हमारे घर में बिजली ऐसे आती रहती है. अच्छा, ओके, तीन एक्सेट्रा आगे बढ़ बनाते जाओ. In our house, in 1 second, हम्म, 50 full cycles come. So this was one cycle which I've drawn. Time period लिखा है ना मैंने. हम्म, So if you make 50 of these, so 1, 2, 3, 4, ऐसे 50 बना लो. हम्म, So you can notice हमारे घर में 50 बार पीक आती है पॉजिटिव साइड पे और 50 बार नेगेटिव साइड पे. फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड हम्म, में कितनी बार रेपिटेशन हो रही है. yes sir. So that is called frequency of the signal. In India, it's 50 hertz. In America, it is 60 hertz. So the world is divided in 50 and 60. Okay. यूनिफॉर्मिटी नहीं है वर्ल्ड में. अमेरिकन हम्म, इंस्ट्रूमेंट कहाँ चलते हैं फिर इंडियन में अडॉप्टर खरीदना पड़ता है. हम्म, तो यही होता है उसके अंदर रीजन. okay, वोल्टेज का भी ठीक है. फर्क रहता है. यूएस में पीक वोल्टेज जो है, आई थिंक दैट इज अराउंड 150 और सो. इन हम्म, इंडिया इट इज 300 समथिंग. बट एक और कॉन्सेप्ट होता है रूट मीन स्क्वायर का, वो हमारे यहाँ पे 220 वोल्ट्स होती है. यूएस में हम्म, 110 है. तो yes sir. यूएस में लिखा होगा 110 60 hertz. So the Yes sir. root mean square value of the signal, which I will tell you what it is, varies, repeats itself at 60 cycles, 60 times per second. Or India में it is 220 oblique 50 hertz. So we get a 220 RMS value. In 1 second we get 50 times. तो हमारा जो हम्म, resistor अगर लगा हुआ है, if we connect a resistor and we show the alternating signal with this, हम्म, ये साइन होता है उसके से, मतलब sinusoidal. Okay, this R. So if you see the signal across this resistance, you will find it is varying continuously, attains a value, stops, becomes zero, then becomes हम्म, reverse. तो आपको दिखेगा कि एक साइकिल के अंदर, for example, here it started with 0, 0, and then it becomes 0. 3 times it has become 0. हम्म, 1 time it has become positive, highest, then it is negative. ये देखो, it is increasing, then decreasing, and then going to the negative side and again increasing. तो यही चलता रहता है बस. This is what अच्छा, goes on, okay. right? So you can हम्म, see a DC current is constant and in the same direction, whereas the alternating current is not constant. It is time varying. हम्म, समय के साथ बदलना, हर सेकंड में बदलना. If I give you an हम्म, equation that the voltage in India जो लिखी भी जाती है, it is 314 sine of omega. Remember, omega is 2 pi into frequency. हम्म, This is in hertz. Okay, so okay. 2 pi into 50 into t, time dependence. हम्म, 314 sine of 100 pi t. This is our general signal in India. okay. So you can see if you put different values of t, you will get a different V. हम्म, Keep putting the values and you will get a different t. yes sir. ठीक है, तो इंडिया में you can see the sign. If I put, for example, t is equal to say 1 second. हम्म,
Okay, then Vt is equal to 314 sine of 100 pi. Yes, sir. T is equal to 1 है. Okay, हाँ, now I know 2 pi plus theta होता है इसका repeat interval. So this is 314 sine of trigonometry again. 36 or 28 pi. ठीक है. And in fact, it is a multiple of 2 pi. 100 हाँ, वो pi भी है. is a multiple of 2 pi also. I can write this as sine of 50 into 2 pi, 0. Sine of 2 ठीक pi है. is 0. 0 होगा. So even at t equal to 1 second, this signal is going to be 0. 0. Similarly, you can get different values of t, and in one of the values, for example, the sine comes out to be an angle which lies in the third and fourth quadrant. तो साइन वहां पे नेगेटिव होता है. You will get a negative value. हाँ, ठीक है. जैसे साइन फ्लक्चुएट करता है वैसे ही. हम्म, Any doubt in your mind? So an alternating current shows change in the direction of the signal and also shows change in value of the signal, magnitude of the signal. True, right? Yes, sir. DC on the contrary is fixed. 5 वोल्ट दे रहे हैं तो बस 5 वोल्ट ही दे रहे हैं. Unless you reverse this battery, the direction of the current will remain this. जबकि इस रेजिस्टर के अंदर पहले करंट ऐसे जाएगा बढ़ता हुआ, हम्म, फिर वो घटना शुरू हो जाएगा और फिर उल्टा शुरू हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है. ये पार्ट जो है 0 था, बढ़ना शुरू हुआ, अभी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 0 हो गया. अब उल्टा शुरू हो गया बहना और उल्टी साइड पे बढ़ना शुरू हो गया. हाईएस्ट नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव 0 की तरफ बढ़ता रहा. हम्म, ठीक है. Very basic comparison being done. Okay, this value, since it is time dependent and changes with the time, this is called the instantaneous value, identical to calculus. हम्म, Instantaneous value. This value is the peak value. Peak values. ये डॉट्स लगाई है मैंने, ये पीक. बट एट एनी टाइम की जो बेसिक इक्वेशन है, दिस बेसिक इज कॉल्ड एज द time varying equation, or it represents the instantaneous value of the signal. I am using the word signal because sometimes they also give you this. Current is this, okay? For example, here resistance is 2 ohms. And I have to find, so V by R. Ohm's law is applicable to resistor, irrespective of type of voltage. So 314 sine 100 pi t divided by 2 ohms. So I will get 157 sine of 100 pi t it. So my current signal will look like this. So this is I versus t. The peak value, you know, at 90 degree, when this thing becomes 90, so 100 pi t is equal to pi by 2. So t is equal to pi काट रहा हूं मैं. T is equal to 1 by 200. So this is t is equal to 1 by 200. I will be equal to, this will become 1 because 100 pi t is equal to pi by 2. So this is 157 into sine 90 is equal to 157. Yes, sir. So this is your at t equal to 1. So you are able to find out at what instant peak of positive side is attained. तो ये करंट हो गया आपका फिर 157 एम्पियर्स. निकाला है हमने. हाँ. डाला है टाइम को. ठीक है. Okay, now let's find out when is it minus. So say okay, 157 it, and this should be sine of
270 साइन जो है यहाँ पे 270 पे नेगेटिव आ रहा है. So this 100 pi t is the general expression. So if this becomes 100 pi t is equal to 3 pi by 2, pi goes away, t is equal to 3 by 200 seconds. So this is 1 by 200, another 1 by 200, and another 1 by 200. So total 3 by 200 हो गया सबका sum. Sorry, 1 by 200, 1 by 200, and 1 by 200. So this. So you will get IT is equal to 157. Sine of 3 pi by 2 is equal to 157 into minus 1. आ गया? At what instant? So using this equation, you can also say, okay, so at what time? Let me change the question a bit. So you can see the instantaneous value can be calculated. So एक बंदे ने बोला, okay, at what time the value of voltage signal become half the peak voltage. So no problem. So given the voltage signal instantaneous value at any time is given by 314 sine of 100 pi t. So okay, no problem. You want this is my peak. Remember, if there is a curve y is equal to a sine omega t. If I draw a graph of this becomes 90 degree. तो मैं ये ओमेगा टी का बना रहा हूँ, टी का ग्राफ नहीं बना रहा, ओमेगा टी का. तो सीधा ही 90 ले रहा हूँ, 180, 270, 360. तो it is like this, right? तो if you put 90, what is the value of y? a आ जाएगा ना. ओमेगा टी इक्वल टू 90 डाल लो. y will become equal to how much? पीक वैल्यू. y is equal to a हो जाएगा, है ना, पीक वैल्यू आ गई. तो मेरे को बोला है कि at what time the value of VT becomes half the peak value. So this value should be half of the peak value. Peak value यही होती है साइन ग्राफ पे, जो आगे लिखी होती है साइन के. So this will become 314 by 2 is equal to 314 sine of 100 pi t. So 1 by 2 is equal to sine of 100 pi t. 100 pi t is equal to pi by 6 sine 30. pi घट गया, t is equal to pi by got it? Yes sir. ठीक है. So this peak value जिसको बार बार मैं पीक बोल रहा हूँ, ये पीक है ना, is also called as amplitude of the signal. अगर पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड लिखा है तो वन एंड द सेम थिंग, नथिंग टू वरी. ठीक है, ऑलराइट. इंस्टेंटेनियस भी क्लियर हो गया, साइनसॉइडल भी क्लियर हो गया. Okay. So frequency is the number of cycles completed in 1 second. Definition. Yes. Frequency of the signal amplitude of the signal. Can be voltage signal, can be current signal. Okay. ठीक है जी, all right. Let's move forward on part B. Okay, so now let's talk about. So now this chapter has a lot of integration and trigonometry use.
Okay, it's heavy on that. Not difficult one, easy, but लगता है. So it also goes to tell you why you should be practicing trigonometry very often and integration. Without these two, you can't solve this chapter. You should be good in this. समझ में आना चाहिए. Definite integration basically. Okay, now question is, we have to calculate the average value of the alternating signal. See the impression, and this can also come from common sense that अगर आपकी signal ये है, if this is your signal, okay, so this is obviously V, same, I draw it with omega t. So VT, some people draw it with t seconds में, कई लोग omega t radians में बना लेते हैं. Vt is equal to V naught, this is the amplitude, sine of omega t. ये थीटा ही होता है हमेशा अंदर, dimensionless. This is V, this is omega t. Just marking. Now, so if I tell you the average, what I'm asking you is tell me the average value. तो ठीक है, it fluctuate कर रहा है, तो हर सेकंड में बदलता जा रहा है, बट एक साइकिल में एवरेज क्या है? Some people are interested, right, in averages. Average value of the alternating singular in one cycle. So your one cycle, so this is 1/4 of a cycle, this is half the cycle, this is 3/4 the cycle, and this is the complete cycle. तो पूरा टाइम पीरियड हो गया. पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. एंड फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या क्या रिलेशनशिप होता है, ये होता है. इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50. तो इंडिया में जो टाइम लगता है एक साइकिल का, 50 साइकिल का 1 सेकेंड, तो एक साइकिल का 1/50th ऑफ अ सेकेंड. एक सेकेंड में 50 होती है ना साइकिल इंडिया में. तो एक का कितना होगा? टी रिप्रेजेंट्स टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन साइकिल. ठीक है? All right. Now, average value. That's our topic. If you see the average value, बहुत ध्यान से, तो it does appear that it is 0 because half the time it remains positive. And the other half which is symmetrically identical. भाई अगर यहाँ पे एक वैल्यू पीक आती है तो उसका करस्पॉन्डिंग नेगेटिव भी तो आ जाता है. और अगर ये वैल्यू आती है एक 30 डिग्री पे, सेम वैल्यू गेट्स रिपीटेड हेयर ऑल्सो. सॉरी, हेयर. अगर मैं बात करूं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, में भी हेयर. एक वैल्यू अगर यहाँ पे आती है ड्रॉप करते हुए, तो एक वैल्यू यहाँ भी आ सकती है. ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू की, तो कैंसिलेशन तो चल ही रही है लगातार. इफ यू आर सेइंग दिस वैल्यू, आई विल शो यू दिस वैल्यू, देन कोई ना कोई एंगल साइन का रिपीट होता रहता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साइन. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. वही सेम वैल्यूज फिर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव बन के आ जाती हैं, सेम. तो essentially what is happening, the average of the signal is coming out to be 0 from the diagram, right? Let's prove this mathematically, that the average of alternating signal over one cycle, मैंने लिखा ना in one cycle, some people can call over one. I mean, so my proof is more analytical, and I'm analyzing यहाँ पॉजिटिव या फिर तो उसका करस्पॉन्डिंग नेगेटिव है ना. तो बट देर इज अनदर वे which is more mathematical in nature instead of analytical. Okay, so what is that way to prove it? So what you do is you say, okay, assume that the current remains, so let very small time interval pass. Okay, so let the time interval which passes is delta t.
तो हम बोलते हैं नॉर्मली तो करंट चेंज हो जाना चाहिए इसके अंदर बिकॉज इट इज टाइम वेरिंग, बट दैट दिस टाइम पीरियड इज सो स्मॉल दैट आई रिमेन्स सेम थ्रू आउट दिस पीरियड। या वी वोल्टेज लिखना है, वोल्टेज लिख लो, योर चॉइस। yes, So what is a flow of charge during this interval? I into dt. hmm, I is dq by dt, the instantaneous value. hmm, Okay, so I write it as I naught sine omega t dt. Let's calculate ki through the cycle what is the total charge that flows. hmm, ठीक है, 0 to t. So this comes out to be I naught, and you can see, right, minus cos omega t divided by omega because ये coefficient है. एक साइकिल मतलब 0 to 2 pi hmm, is equal to I naught, मैं माइनस बाहर लिख रहा हूँ, cos of 2 pi minus cos of 0, 1 minus 1, 0. The net charge that has flown. So if I take this to be the current signal, for example, upper part में positive charge flow करा, hmm, दूसरे में negative charge है, negative हाँ, side. Net charge कितना flow करा एक cycle में? 0. 0, So this is the average value of AC hmm, over a cycle, 0. और diagram से भी we could do it analytically. For every positive value in the first 180 degrees, there is a negative value available in the second half of the cycle, which starts from 180 degree and ends at 360 degree. hmm, ठीक है, Got it? hmm, So average values. ऐसे तो फिर ये it also conveys a very weird मतलब बिजली खर्ची नहीं हुई फिर तो the average is 0. तो why we pay hmm, bill, right? yes, And sir, and therefore when I had mentioned that we have something called as a root mean square value, that is hmm, what I meant. Root mean square. Okay. That actually helps you understand why the average is 0, but you still end up paying money. hmm, You can go back to the electricity company. आपने तो मुझे कुछ सप्लाई नहीं करा, हाँ, तो मेरे पैसे किस बात के ले रहे हो yes, तुम? बट कैलकुलेशन ऐसे करते नहीं है वो. There is a way they calculate it because this logic is a very mathematical type of logic. You have not supplied me anything. Why are you charging me? The average hmm, is 0. yes, 50 sir, cycle में भी average is 0. Why are you charging me, right? So hmm, to overcome that anomaly in your mind, we will study something called as the root mean square value of signal. It's a mathematical concept to clear this confusion. If the average is 0, why are you still charging me? hmm, Okay, I'm going to the next page now. Tell me if I'm going too fast, I'll slow down. नहीं ठीक है, I'm going as simple, है ना? hmm, Okay. hmm, So now let's talk about so average value आपने एक तो निकाल ली. Let's calculate the average value. Same thing, hmm, but now with a difference. The average value over half the cycle. So you can see the signal. So this is your signal. So you can see the first half, hmm, T by 2, right? हाँ, This is also T by 2. So the cycle finishes here. This is the start point of the cycle. This is the end of the cycle. But if I just consider 0 to pi, इतनी सारी वैल्यूज है ना, बहुत सारी. हाँ, okay, मान लो क्लास में बच्चों के नंबर ही हैं ये, hmm, सब पॉजिटिव हैं. तो ओवर द हाफ साइकिल यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ द एवरेज. okay, ठीक है. नाउ लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट. सो ओवर अ फुल साइकिल वी गॉट 0 एनीवे, hmm, बट लेट्स सी 0 टू पाई में क्या होता है. ओके, सो Q is equal to I dt. We have already noticed. I naught sine omega t dt.
Same. हाँ. Let us consider a very small time interval of dt during this signal. ये आपका small time interval है, ठीक है. Let the current during this, वैसे तो करंट थोड़ा बढ़ गया दिख रहा है फिगर में, बट assume कर लो these two currents are so close that they are equal. नहीं तो दो लिखने पड़ जाएंगे ना. एक लिखना पड़ जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी, एक ये लिखना पड़ जाएगा. तो हम बोल रहे हैं कि थ्रू दिस स्मॉल टाइम इंटरवल द करंट रिमेन्स सेम. यही वाला रहता है. टाइम बढ़ गया लेकिन करंट नहीं बढ़ा. दिस इज व्हाट वी मीन बिकॉज दिस इज सो स्मॉल दैट द increase in current is not noticeable. Now let's do an integration. Okay, so dq, small time, small charge. Integrate dq is equal to 0 to pi by 2. I naught sin omega t dt. ठीक है. Okay, so remember we are doing mean, so we have to divide this also by the time. अपने आप नीचे देखना क्या आएगा. So you will calculate mean के लिए होता है ना divide by the total number of students. ऐसे ही करते हैं ना, टोटल मार्क्स सारे स्टूडेंट के ऐड करके डिवाइडेड बाय, तो वही कर रहे हैं हम. तो नीचे अपने आप टी आना आएगा जब सॉल्व करेंगे. सो लेट्स टू डू. सो ये आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय, सॉरी अभी तो कुछ भी नहीं है, 0 टू टाइम पीरियड 0 टू टी बाय 2 इज इक्वल टू आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 to t by 2 is equal to minus I naught upon omega naught cos of pi by 2 minus cos of 0 is equal to, sorry, I think I should just write it as, why I have written it as omega naught. It is frequency of, angular frequency बोलते हैं इसको सिग्नल की. If f is the frequency of the signal, omega is the angular frequency of the signal. मतलब 2 pi f. ठीक है. So this is minus omega 2 pi f 0 minus 1 is equal to I upon 2 pi into 1 by t. t आ गया ऊपर. ठीक है. ठीक है. ये आंसर आ गया आई एवरेज का. बेसिकली हमने करा क्या है, एवरेज होगा मतलब अगर मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज में, सो द टोटल चार्ज which is a like sum of marks of all the students divided by total time. Also think na, if you have a graph of I versus t, the area under the curve represents the charge I dt. So this is the area under the curve. तो ये हमने छोटा सा हिस्सा लिया था ना dt. So ये जो एरिया था, it represented a small charge. ये निकाला है हमने, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है. सॉरी ये पीक वैल्यू आई नॉट. अच्छा ये निकल गया हमारा आई एवरेज. आई नॉट इनटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2 पाई. सो इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, हमने इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर दिया है, 0 टू टी बाई 2 करना था ना हमें. सॉरी ओमेगा में दिया तो एंगल है, तो हमारा एंगल एट टी बाई 2 विल बी हाउ मच, पाई. ओह व्हाई आई हैव रिटन हियर टी बाई 2, कंफ्यूज हो गया. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस.
Okay, so if this is t, okay, ओमेगा टी को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो एंगल वाइज दिस इज थीटा. हम्म सो थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to π. 0 to π. हाफ साइकिल तो यही होती है ना, ओवर द हाफ. हम्म सो लेट मी जस्ट rewrite this 0 to π. So this will become I naught by omega minus cos of pi, which is -1, minus cos of 0, which is -1. So that will become -2 ऊपर. हम्म एक माइनस बाहर भी है. So this will become 2i and तो 2 कट गया और नीचे सॉरी 2 कटा है, पाई नहीं कटा. सो I naught by pi. Have I done it correctly? 0 to π is half cycle. I naught 2 pi f is correct. 0 to t/2 अगर t में लिया होता, अगर उसमें लिया है एंगल में, तो दिस शुड हैव बीन d थीटा ना. देन d ऑफ थीटा अगर साइन ओमेगा टी में लिया है तो आई शुड हैव हम्म टेकन, मैंने टाइम में ही यस लिया था, सॉरी. लेट मी जस्ट रीराइट दिस. आई स्टार्टेड विद आई थिंक t/2 नॉट विद पाई, क्योंकि if I do sine omega t, then outside also I should get a, I haven't integrated with respect to d omega t. ये तो थीटा है ना, मैंने तो हाँ डी टी से इंटीग्रेट करा है, डी ऑफ ओमेगा हम्म टी से थोड़ा ना करा है. तो मेरा एक ओमेगा एक्स्ट्रा आ जाता बाहर, हम्म जो नहीं आया मेरा. Okay, so let me just rewrite this cleanly. So this is equal to I naught minus cos omega t हम्म upon omega 0 to t/2. So this is I naught upon 2 pi by t, हाँ t 2 pi minus cos of omega into t/2 minus cos of 0. हम्म I naught into t 2 pi minus cos of 2 pi by t into t/2 minus cos of 0, which is -1. Okay, so this is equal to, I think where is the total time we have mentioned? मेरे को, see what we have done ऊपर is total charge dq का integral, हम्म and so our expression this calculates total charge. ठीक है, हम्म ये टोटल टाइम नहीं नीचे लिखा, डिवाइडेड बाय dt 0 to t/2. हाँ t/2 टाइम में हो रहा है ना सब कुछ, तो नीचे एक t/2 भी आना चाहिए. हम्म वही मुझे लग रहा था यार, वो टोटल नंबर ऑफ में t/2 कहाँ चला गया, एवरेज. एवरेज t/2 है. सो हम्म दिस इज I naught इंटू t/2 pi. ये दोनों कट गए, हाँ ये भी कट गया. दिस इज माइनस cos pi एंड दिस इज -1 cos of 0. एक हम्म माइनस साइन ऑलरेडी है इंटीग्रेशन की वजह से, होल डिवाइडेड बाय t/2. सो दिस इज माइनस I naught अपॉन 2 pi इंटू 2/t इंटू t. ये t नीचे है, ये 2 ऊपर ले गया मैं, एक t ऑलरेडी है हमारे पास, -2. तो क्या क्या कटेगा, सी व्हाट गेट्स कैंसल. t गया, 2 गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, 2I naught by pi. ये आंसर है, दिस इज अ करेक्ट. हम्म
चाहे वोल्टेज सिग्नल ले लो या or take the current signal, the average remains the same. I think I had missed this point, the total time. So I have divided it by total time also. Clear? I think I lost you. Yes, sir. I think your connection got वो बैटरी खत्म हो गई. okay. ये clear है? Yes, sir. So you have to memorize this, that Okay. I average or a V average Hmm. for a sinusoidal in half the cycle is 63.7% of the peak value. So if you are saying कि my signal is varying like this over a time period, तो इसका मान लो ये 100 है पूरा peak, Hmm. तो इसके 63% पे this value represents the average. This is Okay. I naught, this is 0.637. So it is as good as saying that एक बैटरी अगर 63.7% देगी करंट तो सेम ही है, चाहे आप Hmm. ऑल्टरनेटिंग लगा लो या ले लो. ऑब्वियसली फर्क है. Construction of machines which run on alternating current is entirely different, but mathematically it is same, that Hmm. if I provide an average current of 63.7% of the peak value, flat current दे दिया ना ये, हाँ. जैसे कि डीसी हो गया, लेकिन दे नहीं पाओगे. बट मतलब कंपेयर करना हो एप्पल टू एप्पल, तो भाई बैटरी का इक्विवेलेंट करंट क्या होगा भाई? 63.7, 0.637. क्रूड मेथड है, कंपैरिजन है नहीं एक्चुअली, बट क्रूड मेथड है. औसतन करंट कितना हुआ हाफ साइकिल में? औसतन करंट की जो वैल्यू है वो है 63.7% 7%. of the peak value. Hmm. Okay, ठीक है. but now the fundamental question, if you are giving average of 0 over a cycle and 63.7% over half the cycle, what is more important to understand is the root mean square Hmm. value, and this is what justifies the payment. अच्छा. रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस बोलते हैं इसको. Hmm. मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है ये, और यही यूज होता है इसके अंदर. Okay. इसका एक और नाम भी है विच यू कैन सी इज वेरी स्ट्राइकिंग, इफेक्टिव. Hmm. इफेक्टिवली यू हैव टू, इफेक्टिव वैल्यू ये है जो काम की वैल्यू है, राइट? Yes, sir. Okay, so but let me first tell you what an RMS value means mathematically. Slide briefly, I will just tell you. Okay. Okay. रूट मीन स्क्वायर की जो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, एंड नॉट एग्जैक्टली ऑल्टरनेटिव करंट, बहुत जगह यूज होता है ये, यूज्ड अच्छा. काफी जगह यूज होता है. और इसके अंदर एक ट्रिक ये है कि देयर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एस्टिमेशन. Hmm. ओके, एंड दैट इज व्हाट uses this concept. तो एवरेज भी बड़ी मिसलीडिंग चीज है. जो एवरेज है, यू कैन से ना, तो पैसे ले लो ना फिर एवरेज पे. हाँ. एवरेज पे नहीं लेते पैसे. ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर ही होता है कि फॉर एग्जांपल यू डू यू डू 20 trades in a share market. Okay, Hmm. and so in one you make some profit, in some you make profit and you make some loss, right? So what you do is
people say, okay, I think I'm not sure if this is a correct example. Let me not take this example क्योंकि मुझे इसका पता नहीं मीनिंग क्या होता है शेयर मार्केट में. But let's say you do some experiment and you get values. I'll come back to science, which is my forte. Okay, so you get some values of 20 minus 10, 30 minus 15, 5, 17, etc., etc., right? So these are your values which you do an experiment and some values are obtained. And somebody says, what is the average? So you do an average. जैसे नंबर लिखे वैसे के वैसे लिख के एवरेज निकाल ली. सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर्स. मान लो n डिजिट्स थे ये, ठीक है. तो आपका आ गया टोटल आ गया जी मेरा 137 और टोटल कितनी रीडिंग्स ली थी आपने 50. तो एवरेज आ गया आपका. तो ये नॉर्मल एवरेज है. ये नॉर्मल एवरेज है ना. This could be profit, this could be loss, etc. But when you do root mean value square, the thinking is all the negative values become positive by squaring. So I will make this as 20 square, I will make this as mine. तो इसका negative चला गया ना. तो 30 square and minus 15 square सबको ऐसे ऐड कर लो और इनको क्या करो. So squares जो करे आपने, so these are your squares. So add all the squares. तो नेगेटिव तो गायब कर दिया ना. तो you get 20 square plus 30 square plus minus 10 square plus ऐसे करते करते and then the total number of readings you have. n readings ली आपने. So squares को add करके root ले लो. If you notice यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है वो इग्नोर नहीं हो गए, जबकि प्योर एवरेज लेने में दे विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव वैल्यूज. ये 10 बन जाएगा, दिस विल बिकम 15, राइट? डायरेक्ट algebraic subtraction. But look at this. First you do square of the number. You add all the squares and divide it by the number of readings. This value is called as a root of mean square. The square root of the square mean. Square का mean निकाल लो और उसका root ले लो. It's called RMS. Now, why are we doing this, right? The point is, if you notice an alternating current like this, if you just take a pure high-level average, the impression you get is यार net average is 0, तो I will not pay. But बिजली कंपनी तो इस पे भी एफर्ट करा है भाई, सप्लाई करने पे. आपका इक्विपमेंट इस पे भी तो चला है. तो बिजली कंपनी बोलती है भाई you have to pay for this also. So the way they do calculation is they say we will square this value. You're using it. Mathematically, you may not be using it, but you're actually using it, na? So they square this value. तो जो वैल्यू मान लो यहाँ पे एक वैल्यू आई sin 30 पे, तो sin 150 पे वही वैल्यू आएगी सेम, और sin ऑफ 210 पे भी आएगी बट नेगेटिव साइड पे आएगी. sin 180 plus 30 and maybe this. So this is 210 degrees. This is 0 degree. This is 180 degree. This is 210 degrees. This is 30 degree. है ना. तो ये लेकिन नेगेटिव साइड पे आ जाएगा ना. तो बिजली कंपनी विल से कि इसके भी पैसे दो, इसके तो दे ही रहे हो, पॉजिटिव है तो इसके भी दो. आप बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये तो नेगेटिव है. आप बोला नो, sin 30 पे जो आपकी वैल्यू आ रही है, वट एवर इट इज कमिंग, कैलकुलेट दिस टू बी x. यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, -x. इसका स्क्वायर करो. दो रीडिंग है ना, रूट लो, 2 पैसे. यूज तो कर रहे थे ना, सिर्फ नेगेटिव से परेशान हो ना, लो नेगेटिव को स्क्वायर कर दिया, ले आओ पैसे. So of all the averages you see, the most important to understand, which has a significance in the real world, is a root mean square value.
हम्म, because it is directly attached to money. हाँ, ठीक है, let's do the calculation of root mean square value. How to calculate the root mean square values? Very important question. Okay, हम्म, derivation type ही है but mathematically है. Okay, so the derive the expression of RMS value of an alternating signal. So the what he means is do this. So you say okay, so your signal, so this is more of a derivation or a mathematical something. Okay, derivation of RMS of an alternating signal. हम्म, I'll go to the next page, I think. हम्म, This again started bothering. Okay, so let's say, so he says, so you know you can use V or I, it is your choice. आपकी मर्जी है वो. हम्म, Okay, and remember one more thing. We will come to the exact definition because alternating current signal जब आप लगाओगे and you have to pay for this and you're using RMS. Essentially, the so for example, you have a heater rod at home or a geyser. हम्म, एलिमेंट होता है उसके अंदर हाँ, और पानी आपका गर्म हो रहा है. अब आप ये तो नहीं कह सकते ना बिजली की कंपनी को कि सर आपने मेरे घर में प्लस चार्ज भेजा तो फिर आपने माइनस चार्ज भेज दिया, कुछ नहीं भेजा. हम्म, उस लॉजिक से तो पानी गर्म नहीं होगा ना. फिर नहीं, पानी तो गर्म हुआ हम्म, है ना. तो वो वाला एवरेज करंट एंड वोल्टेज दोनों की एवरेज निकाल सकते हो आरएमएस, जिस जो इस पानी को गर्म करने के काम आया था, राइट. वो इक्विवेलेंट डीसी करंट जो वो डाल देता अगर मैं बैटरी वाला, आरएमएस वो रिप्रेजेंट करता है क्योंकि यूजफुल पार्ट है. हम्म, आरएमएस, इफ यू नोटिस आई हैव सेड, इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हाँ, प्रैक्टिकल एवरेज है कि. हम्म, तो मैं अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करूं, करंट के हीटिंग इफेक्ट, राइट, आई स्क्वायर आर टी, इतनी एनर्जी जाती है. तो बिजली कंपनी कहती है यार सिग्नल में यहां से ये भेजा या यह भेजा, बिजली तो भेजी ना दोनों, हम्म, तुम्हारे तो काम आई ना. तो जब हम यस सर, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं किसी भी, है तो एक तरह से एवरेज ही, बट हम्म, ये एवरेज बेसिकली जो निकलती है वो बैटरी का जो इक्विवेलेंट करंट होता है ना, जो उतनी हीट सप्लाई करेगा, उसके हाँ, बराबर होता है ये. सो आरएमएस अच्छा, माने रूट मीन स्क्वायर जब निकालोगे आप, ये एक मीन ही है एक तरह का, इट्स एन एवरेज. ये जो एवरेज आता है, ये ये वो वाले डीसी करंट के बराबर होता है जो अगर एक बैटरी ऑपरेटेड अब रॉड लेते, बैटरी से जुड़ा हुआ, हम्म, वो भी उतना ही हीट पैदा करता. अच्छा, मीन में तो जीरो था हम्म, और हाफ साइकिल के अंदर पूरी पिक्चर नहीं है, इट्स हाफ पिक्चर. नाउ हाउ डू यू देन से कि इन अ फुल cycle you will charge me? So I say okay, you have used positive cycle for heating, you have. हम्म, You have also used negative cycle for heating, you have. In both the cases you have used the एनर्जी. मेरी तो लग गई ना, तुम उसको मैथ से क्यों जस्टिफाई कर रहे हो कि आपने चार्ज नहीं सप्लाई करा, जीरो दूंगा मैं तो आपको. ऐसा तो हुआ हम्म, नहीं. हीट तो यहाँ पे भी हुआ है और हीट यहाँ पे भी हुआ है, हाँ, राइट. तो जब इसकी जो एवरेज आएगी ना कैलकुलेशन से, वो वैल्यू अगर आप एक बैटरी से भी सप्लाई करोगे तो उतनी हीटिंग मिलेगी आपको. हम्म, भाई यहां तो वेरी कर रहा है ना, ऐसे टाइम वेरिंग है. हम्म, बैटरी तो एक ही देगी. तो जो आरएमएस वैल्यू की डेरिवेशन से जो रूट मीन स्क्वायर आएगा इस सिग्नल का वैल्यू, वो एक ही आएगा आंसर. जैसे पीछे आया था 63.7%, यहां पे भी कुछ आएगा अभी. हाँ, वो वैल्यू बैटरी वाली वैल्यू होती है. एवरेज हाफ साइकिल की जो वैल्यू निकाली थी 63.7%, दैट इज नॉट द ट्रू एवरेज. वो हीटिंग के काम नहीं आती, वो सिर्फ मैथ्स है. हम्म, ये वाली जो रूट मीन स्क्वायर की एवरेज निकालने वाले हैं अभी हम एक तरीके से, वो एक्चुअल अगर आप बैटरी का उतना ही वही सिंगल करंट दे दो तो हीट कर देगा उतना ही जितना कि ऑल्टरनेटिंग सिग्नल ने करा है. हम्म, ठीक है, अजम्पशन ये है कि हम
रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट तो रेजिस्टेंस में होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर में नहीं होता। हम्म। इट हैज टू बी अ रेजिस्टर, जूल लॉस के लिए। ठीक है, अब ठीक है। निकाल लेते हैं एक डेरिवेशन उसकी। तो हीटिंग इफेक्ट में, फॉर एग्जांपल व्हाट यू डू इज द total heat you supply during a very small time interval will be given by I square R dt. ठीक है, हम्म। the total heat or energy supplied by electricity to the water is given by this, or to any resistor, बल्ब भी हो हाँ। सकता है, anything. I square R होता है हम्म। पावर। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी इज I square R into टाइम। वर्क इज पावर इज वर्क अपॉन टाइम। हम्म। तो वर्क डन इज I square RT. Work done is nothing but, in the case of electricity being used to heat up, so we are saying that it is heat generated by current. Geyser, हम्म। simplest possible, right? So you have supplied this much heat to water or to a resistor using the हम्म। alternating signal. तो आइए alternating वाला है, instantaneous, तो मैं IT लिख देता हूँ इसको, so that there is no confusion. Okay, so this is I naught square sin square omega t into R into dt. Tell me if you have a doubt. नहीं। Small heat or work done by the alternating signal. अब मुझे तो पूरे पूरे का, मैंने देखो पहले तो वो जितने भी नेगेटिव होंगे वैल्यूज उनको पॉजिटिव बनाई दिया मैंने। हम्म। आई नो द डेफिनेशन ऑफ माय RMS current, so now let me integrate both the sides and say, so when I integrate both the sides, on the left hand side I say, okay, so that RMS value over the full cycle, one single current ओवर द कंप्लीट टाइम पीरियड, फिर ये ऐसे लिखा जाएगा। हम्म। तो मैंने लेफ्ट साइड पे बोल दिया, ओके, एक सिंगल उतनी हीट पैदा करेगा ओवर द साइकिल जो ये सिग्नल वाला करंट जो है करेगा। अच्छा। लेफ्ट साइड पे मैंने लिख दिया कि एक ही करंट दे रहा हूं मैं, वो भी इतनी हीट जनरेट कर रहा है जितना ये कर रहा है। हम्म। ठीक है, ठीक है। ओके, सो लेट्स नाउ डू अ कैलकुलेशन ऑफ दिस। ओके, सो दिस इज, तो मैं इसका क्या कर रहा हूं कि ये आर आर तो कट गया दोनों साइड से। हम्म। ये एक सिंगल करंट है कोई जो निकालना है हमें। तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, और पूरे साइकिल में निकालना है 0 to t, सो दिस इज आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रल 0 to t, एंड दिस इज t. गॉट इट? हम्म। So that RMS is coming. You can see if I do an RMS, it will be what? Square root. ठीक है। सारे स्क्वायर करके उसका फिर नंबर ऑफ टोटल टाइम से डिवाइड कर रहे हैं टू फाइंड दिस। हम्म। ओके, सो दिस इज योर IRMS। आई नॉट बाहर ले लिया, हम्म। एंड दिस इज 0 to t बाय द वे। ओके, पूरे टाइम पीरियड में निकलती है RMS, क्योंकि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दिया ना। हाँ। सो आई स्क्वायर, सो दिस इज लाइक आई नॉट बाहर चला गया, टी भी बाहर जा सकता है, हम्म। बट नहीं डालना तो मत डालो, अंदर ही रख लो उसको। तो इसेंशियली योर इंटीग्रल रिड्यूसेस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 to t ओवर अ टाइम पीरियड t। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - cos 2 theta by t, so is equal to I naught 1 - cos 2 omega t by 2, 0 to t हम्म। t।
ये तो इंटीग्रल है ना, नॉर्मल हाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये तो नॉर्मल इंटीग्रल है, हाँ यस सर। nothing great about it. Okay, so I naught हम्म whole integral dt by t is 0 to t minus 0 to t cos 2 omega t by 2 t dt. अलग अलग लिख लिया, यस सर। ठीक है, is equal to, so integral of cos omega 2t in 0 to 2 pi is 0 anyway, definite integral. हाँ Integral of cos 2 omega t will be equal to sin 2 omega t by 2, 0 to t, नीचे 2 ओमेगा भी लिख दिया, 1/2 ओमेगा साइन ऑफ 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 बाय, ये 2 ओमेगा है, 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी, ये टी यहाँ डाल दिया, माइनस साइन ऑफ 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय 0, ये कट जाएगा, साइन 2 पाई 0, ये तो 0 बन गया पार्ट, एक 2 है सॉरी यहाँ पे ये, so this is equal to I naught integral of 0 to t dt by 2t. ठीक है। is equal to I naught, सॉरी t is a fixed number by the way, तो ये तो बाहर भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, dt इंटीग्रेट हो रहा है तो t माइनस 0 हो जाएगा, t बन जाएगा सिर्फ, हम्म sorry why have I written a root here, the root is only here, sorry root is only on the 2, ये तो I naught बाहर है ना, सिर्फ 2 ही तो बचा, यस सर। so IRMSC has come out to be peak का root 2 and 1.414 divided by 2 I naught 0.707 I naught 70% के करीब है पीक के. So if you are given a signal of so many different currents, it is at work, काम कर रहा है ये, और आप बोलते हो कि एक वो वाला करंट बता दो जो उतना ही हीटिंग इफेक्ट पैदा करेगा जो ये सारे करंट्स एक साइकिल में अलग अलग करंट्स है उन्होंने टोटल मिला के करा, तो मैं बोलूंगा अपनी पीक वैल्यू बता दे यार, यू सेड माय पीक वैल्यू इज 14 एम्पियर्स, I will say then use 70% of that, this one, ठीक है, ठीक है। that will produce the same heating effect as this time varying alternating signal will, same heating आएगी, उतने ही जूल्स आ जाएंगे. तो आपने एक बैटरी खरीदी 9.8 एम्पियर्स की जो सप्लाई कर सकती थी, उसको जोड़ दिया रेजिस्टर के साथ, आपने देखा कितना गर्म हुआ है, फिर आपने एक ये वाला सिग्नल लगा लिया जो 14 एम्पियर ऑल्टरनेटिंग करंट वाला, सो योर सिग्नल वाज 14 साइन ओमेगा टी. तो एक टाइम पीरियड में यू विल नोटिस इट आल्सो प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग एज वाज प्रोड्यूस्ड बाय 9.8 एम्पियर डीसी करंट. तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज द एक्चुअल डीसी फॉर्म ऑफ एसी जो बराबर काम करती है. फाइनली तो यू हैव टू टेक वर्क आउट ऑफ इट, राइट? Whether you use DC or AC, you have to take work out of it. What is that work? Easiest work, heating. तो अब हम पैरेलल एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं. अच्छा, डीसी की दुनिया में अगर हीटिंग करनी होती तो वो कौन सा एक करंट होता? इधर तो टाइम वेरिंग है, करंट बदलता जा रहा है, इतने करंट आ रहे हैं, हर थोड़ी देर के बाद करंट बदल रहा है. यू कैन स्प्लिट इट इनटू इनफाइनाइट पार्ट्स. किसी ने बोला भाई इतने सारे करंट है, प्लीज टेल मी वन करंट, imaginary current which actually produce this much heat, that RMS value of the AC signal.
तो आपने एसी सिग्नल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली है। जो रूट मीन स्क्वायर निकला है वो एसी का ही तो करा इंटीग्रल और फलाना। सो द रूट मीन स्क्वायर has been calculated on the AC signal. And what has it told you? That that value is same as a direct current value, which would, so this signal will also produce some heating edge, and this will also produce the same edge. And the relationship between them is that if the peak value of the AC signal is I naught, then use a battery of I naught by root 2. Even that would have given you the same heating effect. And that is why, even though you are not using a battery, you're using the root mean square value, you are being charged for the whole cycle. Battery company is not going to listen to you. Battery company बोलेगी भाई तेरे को पूरे साइकिल की एनर्जी दी है हमने. So think in terms of energy. Please don't think in terms of charge. You given me positive charge, negative charge, net charge 0. No, we have given you energy here and we have given you energy here. Think like that. Please don't. So वो negative energy को positive बनाने के लिए square करते हैं. I square RT. You can't say ना कि भाई if I have, for example, in very simple parlance, I am a coolie, okay, and I carry your bag and take it to the 5th floor. ठीक है? What is the work I have done? mgh, potential energy. Mr. Garvit, you sleeping? No, sir. You are sleeping? Hello. हाँ जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ नहीं, मैं ये तो बोल एग्जांपल रहा दे था रहा हूँ तो। मैं. मैं बोल If somebody does work for you and takes your bag till 6th floor, think I'm not audible. हेलो. Am I audible or not? हेलो. मेरी तरफ से आवाज आ रही है सर. Your voice is clear. Your हेलो. voice is clear. No, your voice is clear, I'm saying. कोई दिक्कत आ रही है? My voice is coming? हाँ आ रही है मेरी आवाज. Okay. So I'm just giving an example. So somebody picks up bag for you and takes it till sixth floor. And then the same person comes down with the bag downstairs. What will you tell him? You have done zero work. Because आपकी net displacement तो zero है. Physics के हिसाब से work done is force into displacement. डिस्प्लेसमेंट. तो क्या आपसे वो zero पैसे लेगा या डबल चार्ज करेगा? डबल करें. आपको फिजिक्स थोड़ा ना समझाओगे, आप उसको ये वाली कहेगा भाई मेरे तो पसीने निकल गए छठी. यही बिजली कंपनी कह रही है आपको कि मैंने आपको सिग्नल अगर इस फॉर्म का दे दिया तो इस बात को क्यों पकड़ लिया आपने कि एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, नो चार्ज सप्लाइड, आई विल नॉट पे. आई हैव एटलीस्ट डन वर्क इन बोथ द साइकिल्स, प्लीज पे मी फॉर वर्क. ठीक है. What you do now is just do a quick revision of all these averages and get familiar with amplitude, root mean square, average value. याद भी करनी है आपको सारी है. Average average over a half the cycle is 63.7%. Root mean square is 70.7%. Average value over a full cycle is 0 of the signal. सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी वाली है एवरेज? आरएमएस. उसको ऐसे लिखते हैं हम. तो अगर मैं आपको बोल दूं एक सिग्नल है, उसकी पीक वैल्यू है 314 वोल्ट. जो इंडिया में पीक वैल्यू आती है ना, ये वाली 314 वोल्ट आती है हमारे घरों में. अब बोलोगे सर ये तो मेरे मीनिंग में, इसका मीनिंग क्या, मैं क्या करूं इसका? मुझे एवरेज बता रहा हूं मैं आपको. रूट मीन स्क्वायर, यूजफुल एवरेज. To calculate it, it comes out to be 220 volts, and this is what is written on the devices. लिखा होता ना इंडिया में 220 वोल्ट, 440 वोल्ट. आरएमएस लिखी होती है हर जगह पे. यूजफुल पार्ट. नहीं तो लोग बोलेंगे why are you telling me peak? भाई you have so many other values, tell me all then. वो बताऊंगा कैसे मैं सबको?
कि 0.001 सेकंड पे इतनी वोल्टेज थी, क्या है ये? 0.002 सेकंड पे आपके घर में इतनी वोल्टेज आएगी. Nobody will understand this, ना? Yes, sir. So instead, what you do is you tell the the work, that value of the signal which does the work. Clear? Yes, sir. So please go back and revise. We will meet in the evening and continue with the discussion.